friends, welcome to the Expertsedge. So here we are with the ShortCAT series, that is 1 minute methods. The topic we are dealing is geometry, and in that topic we are particularly dealing with the triangles. So this is our session 10 on the triangles only, right? I earlier only said that triangle is very important. In the last class we did medians. In this we will be doing angle bisector, perpendicular bisector and altitude. So let's start with the first angle bisector. The point where all the three angle bisector meets is known as in-center. I'll do this later on, but still just now remember this part. So if this angle bisector, that is the internal angle bisector, that this bisects this angle as let's say XX and YY. In that case, angle BIC is given as 90 plus angle A by 2. Okay. If the triangle angle bisector is external angle bisector like this, if this is X and X, this is Y and Y, in that case, my angle BPC is given as 90 minus angle A by 2. So please remember, the angle bisector are, if angle bisector are internals, then the meeting point is about 90 plus A by 2, and if it's external angle bisector, then it is 90 minus A by 2. Let's go to the third one. This is again important. Let's say if internal angle Q is bisected by QT and external angle bisector R is bisected by RT, and they meet let's say at T. If this angle is theta, this is what? 2 theta. Okay. So guys, these are simple properties. सीधे property पे ही questions आते हैं. I earlier also said that ये जो अभी some topics सारे कर रहे हैं, these are not conceptual majorly, these are the property based. आपको सबके डेरिवेशन याद नहीं रखना है, अदरवाइज विल बी हेक्लेस थिंग. जस्ट रिमेंबर द एंड रिजल्ट. उसको 2-3 बार रिवाइज करो, याद हो जाएगा, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वेश्चन विल बी हायर ऑन इट. ओके. सो एज अर्लियर ऑल्सो दिस इज मोर ऑफ लाइक यू कैन से जीके सेशन, है ना, फैक्ट बेस्ड जीके के टाइप ही आपको ये पूरा मैं सेशन करा रहा हूं. सो दिस वाज अ थर्ड फॉर्मूला. नेक्स्ट इज व्हाट रिलेटेड विथ एंगल बाइसेक्टर theorem, very important. If these are the two sides and this is the angle bisector and theta and theta, so this A by B is equal to X by Y. So please remember this. There जो भी A by B का रेशियो होगा वही X और Y का रेशियो होगा. Now this is important. If he has given altitude is what? Nothing but height, and angle bisector. If this angle FAD, let's say this is theta, what is FAD is given as B and C ka difference, whatever is the difference, B minus C or C minus B, that is why given the mod divided by 2. So please remember this. So if let's say if I say angle B is 60 and angle C is 40, so what will be the answer? अगर ये 60 है, ये 40 है, तो मेरा थीटा कितना होगा? 60 minus 40, that is 20 by 2. Theta would be nothing but 10 in that case. Okay, just remember this. Let's go to the sixth part. Now this is important, that is length of an angle bisector. अगर मुझे कभी क्वेश्चन में दिया है कि let's say ये 10 है, ये 6 है, ये 5 है और ये 4 है, ठीक है, randomly I'm just giving, and he is asking the length of this angle bisector. So what is it? Mod of A into B, AB into AC minus BD into DC. So if I just calculate for this, what it will be? AB is 10 into 6 minus 4 into 5. So basically 60 minus 20, 40. AD square. So my AD will be root of 40. Okay, so I hope this part is clear. So just remember this part. Okay. Next and the last one. AO is a meeting point of the angle or the in-center, you can say, right? So AO by OD is B plus C by A, right? So जिस भी vertex से निकला है वो side B और C by A. Let's say if I give it B, let's say give it C and another angle bisector and it goes E. Now what will be BO by OE? Tell me. So BO by OE will be nothing but कौन से vertex से निकला है? B. So that is A plus B upon C. Okay. So this is a 7th formula for it. Now let's go to the question. The first question, in triangle ABC, the external angle, it is the external angle. Let me draw the right, A, B and C. What is the external angle of B?
something like this. ये इसका एंगल बाइसेक्टर, C का भी एक्सटर्नल एंगल something like this. If this is XX, this is YY, and it meets at where? At point T. ठीक है, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, I hope you remember what is the formula. Angle BTC is nothing but 90 degree minus, internal में it becomes plus, and external it is angle A by 2. So what is angle BTC given? 64.5. It would be equal to 90 minus angle A by 2. So by solving this, I'll get angle A as 51. Okay. So I hope this question is clear. Pretty much direct question. Okay. Next, let's go to the next question. Question number 2. What it says? There is a triangle. The external angle of C and internal angle B. Okay, let's say this is angle B, this is C, and this is A. So internal angle B and external angle C, they bisect and they meet at point C, right? Point T. ये तो हमने डायरेक्ट किया था. क्या था इसका फॉर्मूला? अगर ये 35 है, so this becomes what? Angle A is nothing but double of this 70. Right, so 70 has to be answer, right? Can you see कितना fast हो जाता है if you know it earlier? Guys, believe me, you can't solve each and every question in a CAT, right? अगर हम solve करने बैठ गए questions, attempts कम हो जाएंगे, will not get. तो at least you need some question जो जल्दी आ जाए, right? To maintain the run rate. Let's go to the question number 3. Again, I think ये भी direct ही है, right? Formula based जो हमने किया था, क्या है ये? AN is an angle bisector, whereas AM, this is AM, and this is C, and this is B. So angle ABC, this C has given 65, and this angle ACB, this C has given as 35, and what is asking? Man, angle MAN, this theta. I hope you remember that angle MAN will be what? It is nothing but mod of, कोई भी निकाल लो, angle B minus angle C का half, right? So pretty much direct it is. What it will be? The root of 65 minus 35, not root by 2. So basically 30 का half, 15 should be the answer. Okay, let's go to the fourth question. Yeah, again it is based on that ratio part, right? If this is A, this is B, this is C, angle bisectors AD and BE, they intersect at point P. If the sides are BC, this is given as 3, AC, this is given as 5, and AB, this is given as 7. Okay? I'm not saying, tell you the general method. I hope you remember what we did. Just let me quickly revise it. So if this is my triangle and this is my angle bisector, this is point of meeting. So let's say this is A, this is O, this is D. और अगर ये मेरा A था, ये मेरा B था और ये मेरा C था, तो what will be AO by OD? AO by OD will be nothing but A plus B by C, right? The same thing will apply here. So what is asking is BP by PE. So what will be BP by PE? BP by PE. So BP by PE will be nothing but it will involve which two things? Yes, 7 plus 3 divided by 5. So answer for this is 7 plus 3 by 5, 10 by 5, 2:1 is the answer. Okay, pretty much simple अगर आपको ये समझ पता हो तो. ठीक है, next question number 5. It's a very good question. ठीक है, I think it's a past CAT or a ZAT question. I don't remember exactly. I hope you remember जिन्होंने मास पॉइंट ज्योमेट्री किया है, ये वाला क्वेश्चन हमने मास पॉइंट ज्योमेट्री से ऑलरेडी किया है इन द सेकेंड लेक्चर, राइट? और इनफैक्ट आई थिंक इन द फर्स्ट लेक्चर. जस्ट गो थ्रू इट. आई विल सॉल्व जो अभी हमने सीखा है उससे एक बार सॉल्व करते हैं. दिस इज ABC, एंगल बाइसेक्टर BD and angle bisector CE, right? They are divided in center. This is I,
3/2. So basically what it says that BI by ID, right? It is 3:2. And similarly CI by IE, it is 2:1. And what is he asking is I divide the angle bisector through A. So this is asking, let's say F, right? So what is he asking is AI to IF. ठीक है? So let us solve this. Suppose मैं C के opposite वाला ये जो side length of the side है, if I take this as C, ठीक है? Opposite to B, I'll take this side as B, ठीक है? Just a nomenclature it is. And opposite to A is A. Now tell me what will be BI by ID? BI by ID. It would be nothing but addition of A plus C by B, right? Similarly CI by IE, CI by IE, CI by IE will be B plus C, B plus A, in fact B plus A, right? This is B and this is A by C. Okay, now very interesting point to note here is, अब इसको हम जल्दी से कैसे करेंगे? Don't go by that variable and those things, right? यहाँ पे अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का टोटल करूं, what will I get? ABC, A plus B plus C. Similarly, if I do the denominator and numerator का total, here also I'll get ABC, A plus B plus C, right? So in both the cases, what will I get is, in both the cases, numerator plus denominator is A plus B plus C. So what does it mean is that in both the cases it is same, right? So अगर मेरा RHS सेम है न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर का, तो मेरा LHS भी सेम होना चाहिए, right? What is now 3 plus 2? It is 5. And here what is 2 plus 1? It is 3. Are they same? Because if RHS is same, my left hand side also has to be same, numerator plus denominator. But no, 5 and 3 are not same. So let's make it them same. 5 और 3 का LCM क्या होगा? 15. So I should multiply this with 3, both numerator and denominator. And I should multiply this with 5, both numerator and denominator. Now what will I get? This will become now BI, in fact, just sorry. Yeah. So this will become what? A plus C by B. This will become 3 into 3, 9. 9 by 3 to the 6, right? And secondly, it will become A plus B by C. 5 to the 10 plus 5. by 5. So 9 plus 6 15, 10 plus 5 15, right? Now it is balanced. So यहाँ से मैं देख सकता हूँ B का वैल्यू आएगा मेरा 6, right? C का वैल्यू आएगा 5. So B I'll get as 6, C I'll get it as 5, C B रख दो कहीं पे, तो अगर ये मेरा 5 है, A plus C has to be 9, that means A has to be equal to 4, right? So these are the values which I got. Now C is 5, right? B is 6 and A is 4. Now what is he asking is AI to IF. AI to IF. What will be it? AI to IF, it will be C plus B. I hope this formula is clear. So the answer required is C plus B by A. So what is C plus B? C is nothing but 6 plus 5 by 4. That is 11:4 has to be the answer, right? Is it in the option? Yes, it should be. Yeah, second option. Okay guys, I hope this point is clear. Please try and solve this. बहुत अच्छी चीज है. It is very handy, right? Now let's move to the next question. ठीक है, so angle bisector is done. ठीक है, now let's me quickly revise it. All the properties, just questions obviously आपको है. तो there are 7 properties, right? कल हमने मीडियंस के देखे थे, 11 थे. ठीक है, आपको टिप ऑफ टंग याद होनी चाहिए जब भी आप मॉक दो, जब भी रिवाइज करो गाइस, राइट? आई होप यू रिमेम्बर, जब हम बचपन में पढ़ाई करते थे एग्जाम के पहले, हम सब ऐसे याद करते थे मुझे क्या क्या याद है, राइट? ये चैप्टर हो गया, ये हो गया. तो सेम थिंग कैट में भी करना है आपको. योर बेसिक शुड बी सो स्ट्रांग कि मीडियन दिखते से 11 चीजें दिमाग में आनी चाहिए. कुछ तो आपको स्टार्ट मिल जाएगा, राइट? अदरवाइज कुछ भी हेवर्ड शुरू होगी चीजें.
सो एंगल बाइसेक्टर, सो पहला वाला था इंटरनल एंगल बाइसेक्टर रहा तो इट वाज व्हाट 90 प्लस ए बाय 2, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर रहा तो 90 ए माइनस 2, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल बाहर जाके मिले और ऐसी डायग्राम बनी तो एक थीटा होगा बाहर वाला, अंदर वाला 2 थीटा. दिस इज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम दैट दो साइड्स के रेशियो में ही अपोजिट साइड डिवाइड होगी. ये एक पर्टिकुलर केस देखा था जहां पे अल्टीट्यूड और एंगल बाइसेक्टर दिया होता है, राइट. लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर क्लियर है, दैट इज AD स्क्वायर इज AB into AC अपॉन माइनस BD into DC. नेक्स्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट, हमने दो क्वेश्चंस किए, पर्टिकुलरली द लास्ट वन, राइट. AO by OD इज व्हाट BC B plus C by A. ठीक है, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. The meeting point of the perpendicular bisector is known as circumcenter. ठीक है, so particularly like this, basically it is equidistant from the vertices, है ना. so इसको अगर आप पॉइंट लेके सर्कल बनाओ तो it would touch, that is why it is known as circumcircle, right. so triangle सर्कल के अंदर है and in center में क्या होगा, ट्रायंगल के इन सर्कल होगा, अंदर सर्कल होगा, राइट. इसमें ट्रायंगल के बाहर है. so we'll do that in detail, just wait for a minute. so what it is, आपको सर्कल की एक प्रॉपर्टी पता होगी, राइट. जस्ट उसी से डेरिवेशन, उसी का लॉजिक है इनफैक्ट. अगर ये सेंटर से मेरा ओके, इफ एट सेंटर इट इज 2 थीटा, सर्कमफरेंस पे इट विल बी थीटा, राइट. तो सिमिलर प्रॉपर्टी, सो एंगल BOC इज डबल ऑफ एंगल A. ठीक है, जस्ट रिमेंबर फ्रॉम द सर्कल पॉइंट ऑफ व्यू. सो दैट इज द फर्स्ट थिंग इन द परपेंडिकुलर. Let's solve the next question, that is question number 6. What it says, the right angle triangle ABC, right angled at B and angle subtended by AB at the in center. In center is a meeting point of the angle bisector, we just did it. So let's say this is I, this is in center. So this particular angle he has given as what, 110. So I hope you remember the relation. क्या था, angle AIB will be equal to 90 plus उसके ऊपर वाला एंगल कौन सा, angle C by 2. So angle AIB is 110 equal to 90 plus C by 2. So from this I'll get angle C as 40, right. So if angle C is 40, let me write it here. If angle C is 40, ठीक है. Now what it says, D is the midpoint on the hypotenuse, somewhere here D is the midpoint, that means this part should be equal to this part. D right angle triangle में midpoint है, that means it's nothing but the circumcenter, right. Let me erase this just to, तो ये भी मेरा वो same होगा लेंथ. if this is my x, so this will also be x, this will also be x. and why does it happen, because ये center पे होके आप circle लोगे with the radius x. so that is, this becomes my circumcenter basically, right. and we just did the property what, अच्छा ये 40 है तो ये 50 होगा, right. which chord subtends this angle 50, BC chord subtends it, right. so अगर मेरा BC 50 subtend कर रहा है circumference पे, तो सेंटर D इज द सेंटर, माइंड इट, ओके. D इज द सेंटर, तो सेंटर पे कितना सबटेंड करेगा, इन दैट केस D शुड बी डबल ऑफ इट, राइट, थीटा, एंड दिस शुड बी 2 थीटा. सो एंगल BDC which is asking is nothing but 2 into 50, that is 100 is the answer of this question. okay, so I hope this property is clear. ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी हम कर रहे थे, अगर सेंटर हो, ठीक है. दिस इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में वैसी फिगर दिखेंगी. ठीक है, चलिए नेक्स्ट में. सो 4 लाइन्स एंड 4 पॉइंट्स. सो लेट अस गो इनटू द बिग डिटेल. ओके, अभी तो हमने किया है, वो सब हमको वैसे पता है, बट स्टिल इफ आई से द फर्स्ट, जस्ट लेट मी क्विकली ड्रॉ द 4 triangles. right, the first thing which we did,
yesterday, I hope you remember, sorry, in the last class, is nothing but the median, right? What is the meeting point of median is known as? Meeting point of median is centroid, right? G. And what is the property of it? 2:1. Okay, this centroid. Second, what we did is angle bisector, right? In angle bisector, what it is? Angle bisector is in center. तो ये this point is in center, that is I. अगर मैं इसके अंदर एक सर्कल डाल दूं तो जो उसका रेडियस होगा that is nothing but I only. Okay, so this is in center and in radius. Third thing we just did is perpendicular bisector. क्या था perpendicular bisector में? The perpendicular bisector thing is known as circumcenter, right? Circumcenter. So basically ऐसा है, तो this point will be equidistant, right? And from all the sides, this is the important point, equidistant from all the side as well as equidistant from the vertices. ये जो मेरा होगा radius होगा, मैं इस पे एक सर्कल बना सकता हूँ. तो this particular thing is a circumcenter. And the last point which we'll be discussing now is a altitude. Altitude का जो meeting point होता है that is a orthocenter. ठीक है, orthocenter. तो just remember this point, जहां पे भी altitudes meet, altitude is nothing but height, right? तो अगर जहां पे भी heights meet करेंगे, this particular point is known as orthocenter. That will be just seen in a moment. ठीक है, so if I go to the next, yeah, just थोड़ा और एक चीज याद रखना, position of centers. ठीक है, बहुत बार पूछते हैं ये, या कभी कभी आपको यूज भी पड़ेगा विजुअलाइजेशन या डायग्राम बनाने के लिए, तो जस्ट कीप इट इन माइंड. फॉर एक्यूट एंगल ट्रायंगल, अब तक हमने जितने भी फिगर देखे, एक्यूट में सारे सेंटर्स अंदर रहेंगे, राइट? तो चाहे वो ऑर्थो सेंटर हो, तो आई एम जस्ट राइटिंग डैश डैश हियर. कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, ऑल सेंटर्स विल बी इनसाइड द ट्रायंगल. सिमिलरली इन सेंटर, एज द वर्ड ओनली सजेस्ट, राइट, इन, तो इन सेंटर में भी सारे एक्यूट एंगल हो या फिर राइट एंगल हो या ऑब्ट्यूज हो, सब अंदर ही रहते हैं. सिमिलरली सेंट्रॉइड भी इन रहता, तो आई डोंट नीड टू रिमेंबर देम. तो बेसिकली मुझे याद क्या रखने, ऑर्थो सेंटर का एक राइट एंगल वाला आई नीड टू रिमेंबर, एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, राइट? दिस इज वन थिंग. एंड सेकेंड, circumcenter for a right angle triangle and for a obtuse angle triangle. So basically, sorry, these four things you need to remember regarding orthocenter, the position of them. ठीक है, now see here what happens in right angle triangle. The orthocenter is exactly at the 90 degree वाला point. ठीक है, at 90 degree here is the position, at exactly at the 90 degree. What happens at the circumcenter? The right angle circumcenter is at the middle of the hypotenuse. Please remember, midpoint of hypotenuse. It is not inside, it is not outside. Midpoint of hypotenuse is exactly on the hypotenuse in the middle, because यहाँ पे circumcenter, ये इसको रेडियस लेके आप सर्कल बना सकते हो, राइट? सो दिस इज अ पोजीशन ऑफ circumcenter in orthocenter as well as राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थोसेंटर की पोजीशन रहेगी 90 डिग्री पे जहां पे होगा. ठीक है, सो प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट. व्हाट हैपेंस इन ऑब्ट्यूज एंगल? Obtuse angle में it would be outside, the orthocenter would be somewhere here. It has to be equidistant from the side, right? So something like this. So orthocenter is outside in an obtuse angle triangle. Similarly, circumcenter also in this, it is outside. ठीक है, तो मेरा कुछ सर्कल ऐसे बनेगा. If I take this as a radius, ठीक है, please pardon me for this. So please remember, कौन आउटसाइड रहता है, कौन इनसाइड रहता है. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस. एंड इन इक्विलैटरल ट्रायंगल सारे सेंटर्स अंदर रहते हैं. जस्ट रिमेंबर दैट नोट, दैट इन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑल सेंटर्स आर इनसाइड. ठीक है, इन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑल सेंटर्स आर
ऑल सेंटर्स आर इनसाइड. ठीक है, लेट्स गो टू द क्वेश्चंस. ठीक है, ये जस्ट अभी किया था. ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल विल लाई एक्सटीरियर इन. ऑर्थो सेंटर कहाँ बाहर था, जस्ट अगर भूल गए तो जस्ट सी दिस डायग्राम. राइट, दो केसेस में था ऑब्ट्यूज एंगल. राइट, दिस इज अ ऑर्थो सेंटर. सो कहाँ पे बाहर, at right angle triangle it is at exactly 90 degree and outside it is at obtuse angle triangle, right? So exterior में कहाँ पे होगा, obtuse. So answer of this particular question will be obtuse angle triangle. Question number next 10. Yeah, clear है, सिंपल सी प्रॉपर्टी याद हो गई होगी अब तक, यूज भी की हमने. द पोजीशन ऑफ सर्कम सेंटर लाई एट इन राइट एंगल ट्रायंगल. कहाँ पे होता है सर्कम सेंटर, इट इज एग्जैक्टली एट द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस. सो आंसर ऑप्शन सी. ओके, सो सिंपल सी चीज है, बट जस्ट रिमेंबर. नाउ कमिंग टू द इन रेडियस. व्हाट इज इन रेडियस? इन रेडियस इज अ इन सेंटर से जो इन सर्कल का रेडियस होगा दैट इज इन रेडियस. सर्कम रेडियस इज सर्कम सर्कल का रेडियस. ठीक है, सो टू थिंग्स इन राइट एंगल ट्रायंगल, प्लीज रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट इट इज. ठीक है, अभी यहां से नेक्स्ट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट एंगल ट्रायंगल में what is big R? Big R is my circumradius. So suppose if I give this as 6, this is 8 and this is 10, right? So my circumradius, it will lie exactly midway down in the hypotenuse. So my circumradius is always 10 by 2, तो ये हो जाएगा 5, right? In radius के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है, प्लीज रिमेंबर. व्हाट इज द फॉर्मूला? a प्लस b माइनस c बाय 2. ठीक है, इसका सर्कल के प्रॉपर्टी से ये डेरिवेशन आता है, बट इट्स वेरी इजी. प्लीज रिमेंबर, दो छोटी साइड को आप ऐड करोगे और बड़ी साइड को सबट्रैक्ट करोगे. ठीक है, इसका डेरिवेशन इस फॉर्मूले का इफ नीडेड आई विल गिव इन सर्कल के टॉपिक में, डोंट वरी, उसमें हम करेंगे इसका. जो काम के डेरिवेशन है गाइस, जिसका कुछ लॉजिक है, जिसपे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, आई विल श्योरली डिस्कस दैट. ठीक है, बट जो प्योरली डिराइव्ड है एकदम फॉर्मूले से, तो उसका कोई सेंस भी नहीं है और नीड भी नहीं है. सो इन रेडियस का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे दो छोटी साइड ऐड करो, सबट्रैक्ट द हाइपोटेनस एंड देन हाफ. तो ये 6 8 10 का क्या होगा, 6 plus 8 10 14, 6 plus 8 14 minus 10 by 2 that is 2 will be the in radius, right? Another formula, please remember, in radius is equal to s. S is what? Semi perimeter, that is half of the perimeter minus hypotenuse. Also area of triangle is given as in radius into semi perimeter. Everyone knows this. ये भी चीज याद रख लेना, that semi perimeter minus 2r, where r is a circumradius, s is a semi perimeter. And I know that in right angle triangle जो semi median होता है वही circumradius होता है, राइट? तो median should be equal to circumradius. तो इसीलिए यहाँ पे आप m को r या r को m लिख सकते हो. ठीक है, let's go to the question. So in this question what he has given, the length of in radius of a right angle triangle, whose to find the length of in radius I need to find our hypotenuse is 4, whose two sides other than hypotenuse is 49. ठीक है, just other than hypotenuse. So basically अगर एक मेरा 9 हो गया तो ये 40 हो गया. होप यू रिमेंबर द ट्रिपलेट, हमने ट्रिपलेट का क्लास किया था, राइट? 9 का ट्रिपलेट क्या होता है, 9 का स्क्वायर करो 81, 81 का हाफ करो दैट इज 40.5, 40.5 के आगे पीछे के इंटीजर्स, तो दैट इज 40 and 41. So this should be what? 41. Now what is asking in radius? तो ये तो सिंपल सा है, कैसे करना है. इन रेडियस का फॉर्मूला था दो छोटी साइड ऐड करो, तो दैट इज नथिंग बट 40 प्लस 49, बड़ी साइड सबट्रैक्ट करो दैट इज 41 by 2. सॉरी, दिस इज 40 plus 9, it should be 40 plus 9 minus 41 by 2. What it is? 49 minus 41, that is 8 by 2. So the correct answer of this question is 4. ठीक है, so please remember, simple से formula जल्दी याद हो जाएंगे. Next is what? If perimeter and area of triangle is given as a 40 and a 40, दोनों भी 40 है. Perimeter 40 है, so what will I get? Semi perimeter कितना होगा? S will be 20. ठीक है, and एरिया भी 40 है.
एंड व्हाट इज ही आस्किंग इज हाइपोटेनस. इसका डायरेक्ट फॉर्मूला था, इफ यू रिमेंबर, आई जस्ट सॉरी एक बार वापस चाहे तो दिखा देता हूं. कैन यू सी दिस? ही हैज एरिया का फॉर्मूला होगा r इंटू एस, राइट, सेमी पेरीमीटर, and in radius is s minus hypotenuse. Okay, so what is he asking in this question is hypotenuse, right? So I know area and I know semi perimeter. Can I get in radius? Yes. What is the in radius ka formula? Area is equal to r into s, right? Area is given as 40 and semi perimeter is 20, so I'll get in radius as 2, right? जैसे ही मेरा in radius 2 आ गया, मैंने एक और हमने फॉर्मूला देखा था, that in radius is equal to semi perimeter minus hypotenuse, right? So what is the semi in radius? In radius we just got it as 2, semi perimeter is 20, and he is asking hypotenuse. So hypotenuse will be nothing but 20 minus 2, that is 18 should be the answer. Okay, so please remember this part. Let's go to the next question. Yeah, so what is saying? Area of the right angle triangle whose perimeter is 252. So perimeter अगर 252 है, semi perimeter कितना आएगा? Half of this, right? This is nothing but 1, this is 2 and 6, 126, and median drawn on the longest side, that is on the hypotenuse, is m is 56. So I know that median is nothing but circumradius के इतना होगा, right, on the hypotenuse. So if this is 50, this is m, this will also be m, and this will also be m. I think we have just seen the formula directly, right? जिसको दोनों से था. Just let me revise that formula. क्या था? Yeah, this one, right? Semi perimeter minus 2m into s. So if I see here, so what will be the area? Area is semi perimeter minus twice of median into semi perimeter. So what is the semi perimeter? 126 minus 2 into 56 into 50, semi perimeter is 126. So 126 minus 112 into 126, right? So basically this is nothing but 14 into 126. So answer of this question is nothing but 1764. Okay, so प्लेन क्वेश्चन हो जाएगा अगर आपको फॉर्मूला क्लियर है तो. सो प्लीज नोट देम डाउन. वंस अगेन आई एम सेइंग कि एक बार में नहीं याद होने वाले सारे फॉर्मूले, बट एज व्हेन यू गो फॉर द मॉक्स, प्लीज रिवाइज देम, यू विल गेट इट राइट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट कंसेप्ट इज डिस्टेंस बिटवीन r and r. व्हाट इज स्मॉल r? इज इन रेडियस, एंड व्हाट इज द बिग r? इट इज सर्कमरेडियस. ठीक है, गुड. सो इसके दो तरीके से कर सकते हैं. इट्स अ डी स्क्वायर, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन देम इज बिग आर इज सर्कमरेडियस माइनस 2r. ठीक है, दिस इज अ रिलेशन. You know that square, any square has to be greater than or equal to 0, right? So if I equate it with greater than or equal to 0, what I'll get is r, big R by small r का ratio has to be 2:1. तो अगर मेरा in radius 1 है तो circumradius at least 2 होना चाहिए, right? So that is the concept. Let's do the question on this. ठीक है, what it says, the ratio of, find the ratio of circumradius, that is big R to small r of a triangle having this many sides. इसका तो नहीं निकाल पाऊंगा, बहुत मुश्किल जाएगा, राइट? बट अभी हमने देखा था circumradius by in radius का जो रेशियो है, it has to be greater than 2:1, मतलब एटलीस्ट वो डबल होना चाहिए. सो टेल मी, यहाँ पे हो रहा है कि अगर मेरा बिग आर है, स्मॉल आर, ये तो उल्टा हो रहा है, ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा, राइट? डबल से ज्यादा होना चाहिए.
सेकेंड ऑप्शन भी कट जाएगा, ये 3 है तो ये कम से कम 6 होना चाहिए था, ये भी गया। सिमिलरली अगर ये 4 है तो ये कम से कम 8 होना चाहिए था, राइट। इवन दिस ऑप्शन इज गॉन, सो आंसर हैज टू बी नन ऑफ दिस। जो भी होगा मुझे पता नहीं, मैं निकाल लूंगा वन, बट इज एवरीवन क्लियर विद दिस? ठीक है, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now the distance between in center, that is a small r, and a circumcenter of a triangle of a side 6, 8 and 10. We have got a direct formula. इसका मैं जनरल मेथड भी एक बार चाहे तो देखते हैं, बट डायरेक्ट फॉर्मूले से भी एक बार देखते हैं। क्या दिया था फॉर्मूला? आई होप यू रिमेंबर दैट डी स्क्वायर इज सर्कम रेडियस माइनस ब्रैकेट सर्कम रेडियस माइनस ट्वाइस ऑफ इन रेडियस। ठीक है, सो इट इज r minus 2 small r. It's a right angle triangle, तो इसका big R और small r निकालना सिंपल है, right? Big R will be what? At the middle, r is nothing but the hypotenuse का half, that is 10/2. So my big R will be what? 5. This is 6, this is 8 and this is 10, right? So, and what is in radius? In radius का फॉर्मूला था हमारा, दो छोटी साइड ऐड करो, 6 + 8, बड़ी साइड सब्ट्रैक्ट करो by 2, 14, 4/2. So in radius is 2. Okay. So this I got it. Just put it in the formula. So what will be d square? It is 5 bracket 5 minus 2 into 2. So basically d will be nothing but 5 minus 2. D square is 5. So d has to be root of 5. Okay. The general method of this, if we want to solve this, it will be by coordinate geometry. Okay. So I'll take the general method of this in the coming session in coordinate geometry. ठीक है, don't let us not do this. So just remember this formula, बहुत जल्दी आ जाता है, 2-3 बार आप याद करोगे हो जाएगा. Now let's move to the next question. Now area of triangle, can this be a triangle? No, because अगर मेरा in radius 2.5 है तो मेरा circum radius at least 2.5 का डबल होना चाहिए था, that is at least 5. So इसका आंसर होगा data inconsistent, triangle is not possible. Data inconsistent as circum radius has to be at least 5. So in this question it is not possible. ठीक है, so what we did was the perpendicular bisector. Please remember in radius, circumradius, right? Now just remaining is the last thing and then we'll be done with it. What it is? Height. The meeting point of height or the altitude is orthocenter, right? The very first point, remember that in an altitude where they meet that point H, angle BHC, this angle BHC plus ऊपर वाला एंगल ए, दे आर सप्लीमेंट्री, दैट दे एड्स अप टू 180 डिग्री. सो प्लीज रिमेंबर, ये इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है. नेक्स्ट, लेंथ ऑफ एन अल्टीट्यूड. अगर राइट एंगल ट्राइंगल में मुझे हाइट चाहिए इसकी, तो सिंपल होता है a इंटू बी बाय सी. ठीक है, सो लेट्स से इफ आई आस्क यू द हाइट ऑफ 6, 8 एंड 10, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, तो ये ट्राइंगल का हाइट क्या होगा? Nothing but 6 into 8 by 10, that is 4.8. ठीक है, so there is a second thing. Also remember the length of the altitude का रिलेशन. अब तक का क्या था? हाइट का हमको फॉर्मूला निकाला था हमने कि कैसे आता है वो. एक रिलेशन ये भी है दैट हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू पी इंटू क्यू. ठीक है, उस लॉजिक से भी आप ला सकते हो अगर पी और क्यू दिया हो तो. Now this is very important. Please remember that sides and heights of a triangle are inversely proportional. That is, अगर height मेरी h1, h2, h3 है तो sides का रेशियो होगा 1/h1, 1/h2, 1/h3. और vice versa, अगर sides मेरे abc है तो heights will be 1/a, 1/b, 1/c. Let's now fifth part. In radius for a triangle given the heights, that is given as 1/r. Please remember this, 1/r equal to 1/height 1 plus 1/height 2 plus 1/height 3. Okay, now the sixth one. अगर मुझे दो हाइट दी और तीसरी हाइट का मुझे रेंज पूछा है तो प्लीज रिमेंबर द रेंज इज h1 into h2 divided by h1 plus h2, that is the first height and second height, and the larger limit is h1 into h2 upon h1 minus h2. ठीक है, this will become more clear as we go on to the questions.
Now let's see this. What is saying? The question number 17. Find the radius of the incircle. Basically what is he asking? In radius. In radius is nothing but r is asking, having altitude, height दिए. तो क्या relation था? Just we have seen it that 1 by r should be equal to 1 by height 1 plus 1 by height 2 plus 1 by height 3. ठीक है? So here the in radius is asking is equal to height 1 is 1 by 3 plus 1 by 4 plus 1 by 4. ठीक है? Just we need to solve it. So I need to multiply what with the LCM of 4 and 3 is nothing but 12. तो यहाँ पे मैं ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे ऊपर नीचे 3 से, right? So this will be nothing but क्या होगा डिनोमिनेटर में 12, 4 plus 3 plus 3, 4 plus 3 plus 3, right? So that is nothing in 10 by 12, that is my 1 by r. So what will be the r? R in that case is nothing but 12 by 10. So r should be 1.2. Okay, that is my answer. Okay, so I hope this is clear. Remember, very simple it is. You just need to revise it 2-3 times. Now, in triangle ABC, just let me draw the diagram. O is the orthocenter, right? So angle BOC. So what is the relation of orthocenter? Just we did, right? Orthocenter is, let's say, angle BOC plus उसके ऊपर वाला angle, that is A. This are supplementary 180. So अगर angle BOC 130 है तो angle A होगा मेरा 50. Okay. And I is the in center. ठीक है. So let me remove this O now. एक O का काम हो गया, right? मुझे सिर्फ वो A लाना था. ठीक है. So अगर मैं यहाँ पे अभी इन सेंटर डाल देता हूँ, just let me take a different pen. This is in center I, right? पोजीशन सेम नहीं होगी, कुछ अलग अलग पॉइंट पे होंगे, वो डायग्राम ये हो जाएगी, इसलिए मैंने ये लिया, राइट? व्हाट इज ही आस्किंग? फाइंड एंगल BIC. क्या होता है एंगल BIC? एज इट्स इंटरनल एंगल बाइसेक्टर 90 प्लस एंगल A/2, एंड आई नो एंगल A/2, इट इज 90 plus 50 by 2, that is 90 plus 25, so angle is 115 degree. ठीक है? Can you see? छोटा सा चीज था but very useful. Let's go to the next question. ठीक है, अगर हाइट्स का रेशियो 2, 3, 4 है ना, तो साइड्स का रेशियो क्या होगा? सो इफ हाइट्स आर इन द रेशियो 2, 3, 4, साइड्स अभी हमने देखा था दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, साइड्स हैज टू बी द side and height are inversely proportional. ठीक है, तो if heights are in 2, 3, 4, sides will be 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4. What is the LCM of 2, 3, 4? Multiply it with 12. So this is into 12 into 12 into 12. So the sides का ratio will be 6:4:3. Okay, that is the answer of this question. ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है, जस्ट रिवाइजिंग. ना क्वेश्चन नंबर 20. ठीक है, क्या है ये? इसमें कैसा लगेगा हमको? लास्ट वाला फॉर्मूला क्या था? कोई भी अगर मुझे 2 हाइट दिए, थर्ड हाइट कैसे आएगी? उसकी रेंज height 1 into height 2 upon height 1 plus height 2 and height 1 into height 2 minus height 1 minus height 2. ठीक है, तो लेट्स डू इट. So 2 heights are given. So this will be my height 1, this will be height 2, and n is what? Height 3. So how many different integral values? That means it should not be in the point. So n की range क्या होगी? If I write it, n का range, let me write it again the formula first. Height 1 into height 2 upon height 1 plus height 2, and this is what? Height 1 plus height 2 upon height 1 minus height 2. Just now plug in the numbers. So 20 into 40 upon 20 plus 40. This will be what? 20 into 40 upon 40 minus 20. So if you solve this, this n comes out to be how much? This is 20, 20 count, 40 आएगा ये, right?
40 से छोटा होना चाहिए और ये क्या होगा 60 राइट 1/3 this is 20 this is 40 plus 20 60 का 1/3 40 का 1/3 13.33 right but as he is asking us the integer right so integer means point में नहीं चाहिए so n की lowest value what it can take and the lowest it can take is 13.33 से ऊपर that is 14 15 right max it can take is 40 से छोटा that is 39 so how many values are those 14 to 39 so how do we calculate 39 minus 14 plus 1 right so 39 minus 14 is 25 plus 1 26 should be the correct answer of this question okay so I hope this is clear we have done it very much exhaustively you just need to make the notes and revise it ठीक है चारों पॉइंट्स हमने बहुत अच्छे से किया है नेक्स्ट वाला एक ट्रायंगल्स का एक और हम लास्ट सेशन लेंगे जिसमें हम सिमिलरिटी करेंगे देन विल गो टू द क्वाड्रिलेटरल्स एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स ओके थैंक यू कुछ भी डाउट हो प्लीज आस्क अस यू कैन रीच अस वाया टेलीग्राम ग्रुप और वाया द कमेंट सेक्शन और अगर पसंद आए तो प्लीज अपने फ्रेंड्स को शेयर करो ठीक है सो दैट दे कैन गेट बेनिफिटेड थैंक यू गाइस